So I hope my screen is visible. Yes, sir. Okay, so plus we have done with the till now we have done with augmented reality, virtual reality, and also we have introduced about extended reality as well, and how to implement these concept in Unity. And in today's session, we are going to discuss about the another software that is Figma and Canvas, through which we can do the digital marketing and we can generate various digital cards and some kind of UI interactions, user experience design, and user interface design. So before going to that particular part, I just want to know, do you guys having any issues and problem in the development phase uh, till now? Like whatever we have done till now related to the Unity. Have you implemented this concept in your system? So you guys can also, yes, Vikrantji. Yeah, you are not audible, Vikrant. सॉरी सर। Yeah, this is my first class. सर मैंने एक Okay, प्रोजेक्ट बनाया था, एआर बेस्ड मार्कर बेस्ड प्रोजेक्ट। तो okay, मैंने सर उसमें जो 3D मॉडल था वो मैंने माई एसेट्स यूनिटी हब का तो वहां से इंपोर्ट किया था वो। तो मैं उसको कंप्लीट जब उसमें रन कर रहा हूँ तो वो टू एरर शो कर रहा है मुझे। okay. Are you do you having any like which project ready with your system? यस सर। So you guys you can share your screen. Let me check your problem. So those of you are having first class because in today's session I'm going to start with the new concept totally. It's not having any relation with the previous classes, so you can uh, like synchronize with the track. Right after this query, we will like directly forward our session to that particular part. There is no issue. And I will also discuss about the previous concept, the brief about the previous concept, whatever we have learned till now, and what are the requirements nowadays. Yes, Vikrant, are you able to share your screen? यस सर। Okay. So, which type of problem you are facing right now? माई स्क्रीन विजिबल सर। Yeah. Are you not able to like augment this? सर जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने इसके 3D मॉडल कार को मैं इसमें शो कर रहा हूँ। तो Hmm. जैसे इसको हम रन करते हैं, सेव करते हैं, रन है सर बिल्ड सेटिंग्स। तो यहाँ पर सर हम इसको जब बिल्ड करते हैं तो इसमें एक मिनट सर। This project is ready, like is it in working stage? यस यस Okay. सर। मैंने इसको सेव किया तो इसमें आता सर कि यू कैन नॉट क्लियर, मतलब प्लेयर के लिए आता बिल्ड प्लेयर। Okay. यू कैन नॉट प्लेयर विद एरर इंपोर्ट एसेट फॉर द कंप्लाइंग स्क्रिप्ट। Okay. So basically, there are some files which are not able to build as this particular stage. So go to build player setting.
Yes. इसको Scroll, कैसे? scroll, scroll down. Scroll down. Targeted API level is 8.1 Oreo. Okay. So a setting is okay. So might be some compatibility issues there with your software, right? So regarding that, we'll share the document with you, right? As of now, you can try in your system as well. In your system as of now, there is no need to develop the APK. So it's like will take hardly a few minutes to like resolve this issue, right? So अभी तक आपने सिर्फ इसको सिस्टम में ही चेक करना है. So might be we need to update the Android SDK in your system, right? There is no big deal in that. So we can go to the Unity Play Store and we can upgrade the updated version of Android, right? Development तो show हो रहा है ना? AR is you are able to augment the 3D object. यस सर। Okay. Any other issues from the participant side? Like if you are not able to build, how many of you have built? You can raise your hand. Means the augmented stuff is ready if you have tried it. Because this particular development part is very, very important in terms of marketing point of view, marketing aspects, because there is no like it is not required you need to learn all the development part, but the basic concept you must know. For example, if you are going to start a new business can be anything. It can be related to any particular uh, you can say the website or some kind of shopping cart or any kind of vendors, any kind of business, any kind of restaurants, right? So whatever the business you are going to start, whether you are able to approach to the customer or not, that is very, very important, right? So digital marketing plays an important role for that. So AR is one of the sporting stuff which is being provided to you as a techniques through which you can explore the product. Any kind of product you can explore in 3D, right? So that is basically the AR, means augmented reality, through which you can augment the 3D objects or the product related information into the real-time environment. So that is basically the AR, which you have already gone through in the last previous sessions, right? So from now onwards, we are going to start with the next software, that is Figma, right? So if you guys having any doubt in this particular Unity software, you can put your queries in chat box. And if you're not having, that is good. So let me start with another part of today's session. Right. So Figma, why we need Figma? First of all, you must know Figma is a software through which we can design. You can write down the definition as well if you want. Figma is a software through which we can design the and user experience, user interface and user experience about a particular product, about a particular product, right? So this will be the definitions in which you can also design various kind of logos, like company logo. You can build your own logo about your business, and you can also promote your business like Canvas, right? Have you heard about Canva before? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Canvas sir. software. Okay. So what is the use of Canva software? Can you put in chat box or speak? Sir, So to design make a design Get or influence, editing picture, poster or remove background. poster, images, background, video, thumbnails, design thumbnails, posters. We can quick also edit editing. videos on it. Okay. So, perfect, whatever you are saying. But Figma is used for industrial used, right? So, if you move to the industry
industry as an entrepreneur, Figma is the advanced version of the Canva, right? So in Canva, you will be having a ready-made things. All the things are ready-made and plug. You just have to use it, right? Drag and drop task is there. For example, if you want to create a visiting card, right? Digital cards if you want to create, or some kind of promotions, Instagram related and kind of Facebook related or social media related advertisement you want to do. So that kind of things you can implement using Canvas. So Figma is similar to that, but it is the advanced version of it, right? Because in Canva, you cannot generate the perfect logos about a business. You cannot generate about a particular product. You cannot explore the product in a like different manner. It's just a simple, easy to use software, like you just have to plug and play kind of things, right? But Figma is a kind of things through which we can use to develop our design. For example, whatever the design you are able to see related to the Figma, that is your website. For example, if you want to make a website, so to make a website, what you need to do is you need to design the entire interface. For example, just a second, hold on. For example, I will show you a website. So I'm just going to share my screen. Let's move to a particular website. Um, just compiler. Okay. For example, this is a particular website, right? Where you can do the coding stuff, right? Online editor, right? So what you need to do is you need to design each and every part of that particular website, like where you need to place the code, where you will be able to get the output. Let's move AWS console. Let's move to another website like this. Right, that. So in this particular website, you need to design the entire thing. You need to tell the developer, like we need to have a agentic AI with our website, discover AWS products related to the AWS solutions, pricing, resources. So these kind of things you need to tell, you need to inform to the developer, right? So how will you inform that, right? For example, you want to make a digital card. So how will you inform to the developer or the designer, we want this kind of things, right? So to make this kind of things, to make this kind of design, we need to have a digital design document with us, right? For example, whatever comes in your mind, how I am able to understand. So आप बोल के बताते हो, like we need this kind of product. For example, if it is a shopping cart, shopping website, so आप बताते हो, so we need a shopping website, right? In which there are different categories on left side where we can select the gender and various pricing items and filter out these items, right? So, but if you want to inform to the developer, what you need to do is you need to provide the game, basically the design document to the developer. Let us suppose you want to start a restaurant, right? Any kind of business you can do with it. And to start a restaurant, you need a website and you need to like promote your product, right? So what you need to do is you need a complete design document through which you can convey the information to the developer, to the designer, as well as to the customer also. It can be a customer. For example, you want to provide your digital card. So how can you design it? So designing part is also very, very important. So that particular designing, for example, in Unity में आपने किया है, Unity में you have like downloaded a particular AR marker, that is default AR marker.
But if you want to design your own AR marker, that is where you want to place the 3D objects or the product. So how can you design it? So that designing part is also very, very important in terms of digital marketing. So to promote your product, digital marketing, emerging techniques plus designing plus AI and plus metaverse is all these techniques plays an important role, right? So we have discussed about various existing projects related to the freelance free you used freelancing, right? Lenskart and kind of various Amazon also use that particular AR stuff. Well, so we need a interactive environment so that our customer can directly deal with that particular environment. They don't need to face any problem, right? So to make that kind of design, we need a particular designing software through which we can design it. So that software name is Figma, which already आपने उसकी definition लिख ली है why we use Figma. It is just a advanced version of the Canvas, right? So where we are going to learn how we can make different logo, how we can generate the designing page. In fact, this particular page which is in front of you, that is AWS related product or website. So that particular entire uh, page you can design using Figma software, right? You don't need to worry about the designing part, right? So in fact, in nowadays, Figma is also important for to create the coding stuffs, right? So once you design all the platform, all the designing part, you don't need to write the code for that, right? Designing part, you can make your own website, right? You can convert that particular design to your own website also, right? So now we are going to log into that particular Figma software. So Figma is available for both the version, like it can be available for the desktop version, online भी है available and offline भी आपका available है. You just have to write the Figma download for Windows, right? I'm just going to share a link with you also. Just click on Figma and we'll put that link in the chat box. So this is the link which I have shared in chat box with everyone. You guys can download this, and there is one more way you can use that Figma as a web page. So this is the download app that we are using, and this is the online version that you can use. So already I have a product Figma design. So what you need to do is click on profile picture. You will be directed to this page, right? Otherwise, what you need to do is you need to log in to the desktop version. Desktop version पे कैसे login करते हैं? Just type Figma login. Have you heard about this software before? ये देखो, ये एक login का desktop version है, जिसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. This is the desktop version. So you will be available both the versions. It can be a desktop version or directly you can do the task on Drive. So click on login. Continue with the Google. So once you click on Google, so आपको क्या करना है? किसी भी आईडी से सिलेक्ट करना है. For example, I am having 3 Gmail IDs. So whatever the IDs you are using as a Gmail, so you can use any ID. I'm using this one. So you will be directed to the next home page. So this is the home page, right, of the Figma. Are you able to see the home page? Yes, sir. Okay. So this home page provides various windows
लाइक इन टॉप साइड पे आपका है फिग्मा डिजाइन, फिग्जैम, स्लाइड्स, बस, साइट, राइट. इनफैक्ट यू कैन मेक द पीपीटी यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर आल्सो. एंड लेफ्ट साइड पे है आपका ऑल प्रोजेक्ट्स. यू कैन क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स. हो सकता है कि ये आप this project window will not be visible to you because have not prepared any project as of now. So if you are preparing the projects, existing projects will be visible in that particular section. And various resources, plugins you can download. And this is trash. It is nothing. It's just like a recycle bin. And what you need to do is you need to create the new projects for that. So to create the new project, what you need to do is go to all projects and all projects पे आप create करोगे and click on that particular icon. So it is asking you to upgrade to professionals. I'm not going to purchase it. So we'll directly go to that particular project part. I will go for free version. Right? You don't need to like purchase that paid version. Just go to that particular free version here. This is the free version you will get here. Right? Maybe possible my free version is expired. Let me check. This bucket. Now, recents में हम क्या करेंगे? डिजाइन पे जाएंगे. Are you able to see that window? So this will be the first window that will be visible in front of you. Here you need to do all the work, designing work, right? So first of all, I will discuss about all the components. This is the home page, you can say. Like it is the ready-made home page, जिसमें आपको हर एक component visible होगा. This is the first project that you are going to create using Figma. I will give the project name on left side पे हम. For example, we are going to design for example, login page. Login page. You can design anything. It can be a digital card, for example, that you can further use for as an AR marker. Are you getting my point? So you can design anything. So I'm going to design a login page for a website. Now, to design that particular login page, once you click on it, click on that particular icon here. And click on pages here. So this will be the first page I'm working. So you can create different pages here. So you may have multiple pages. So I will work for first page here. And and on your right side, you will be having various attributes. जैसे यूनिटी पे आपका राइट साइड पे इंस्पेक्टर विंडोज होती थी, where you can change the attributes of the element. Similarly, in this particular software, you will be having attributes on your right side. Yes, so these are the attributes. For example, you want to change the color and variables, right? Number, strings, boolean, and styles also. If you are visiting first time, so all the guidance will be provided over to that particular software. Text है, color है, effect size है. So that kind of effects depth means the stylish part is there about a particular component. Clear? And left top bottom side पे you are able to see that particular working panel. Are you able to see this particular panel? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So
this is the working panel means first these working tools Unity में भी ऐसा working panel होता था if you aware about it लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टॉप पे लेफ्ट साइड पे होता था वो ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ once you move to the Unity ये रहा means through which you can do the various interaction part ये हैंड टूल है लेफ्ट राइट मूवमेंट टूल है रोटेट टूल इज आल्सो देयर सो दीज आर काइंड ऑफ अ assisting panel you can see. So we'll move back to the working panel. So first of all, we need to take a page where you are going to design the component. So there is a frame tool here. F. You can press Control F or you can take the frame if whatever you want. Once you click on frame tool over there, so you will get, you change the direction of this first. Okay. Once you click on frame tool, right side pe you are able to see all the properties are visible. Like Unity. Once you take a particular game object in Unity, all the properties will be visible on right side inspector window. Just remember that part. Similarly here, whatever the components you are taking, you are going to take a frame where you are going to insert the elements. So what are the use of frames? Normally हम photo frame होती है photo frame में हम you can insert the photos. So frame is the blank component that you need to do where you can insert the designing photos and whatever the material you want to add. So that is the frame, definition of frame. So we are going to design the, for example, you want to promote your product. Okay. So to promote your product, so I just want to know from your side which kind of product you want to promote. Any business idea which comes in your mind? So furniture. Furniture. Okay. Furniture product you want to promote and which platform you want to use to promote your product? So Flipkart. Not, I'm not asking the like company. I'm asking about the platform. iOS के through करना चाहते हो, Android के through करना चाहते हो? First of all, you need to decide that. Android. Android. Okay. Because we are having two directions. अगर आप एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं और एंड्रॉइड पे ही आपको उसका प्रोडक्ट जो है वो पूरा एक इंटरफेस डिजाइन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एंड्रॉइड इफ यू वांट टू वर्क फॉर iOS so these options are also available for that and if another banners के through you want to promote your product banner option is also there ठीक है so will desktop version is also there जैसे हमने फ्रेम पे क्लिक किया ना राइट साइड पे आप देख पा रहे होंगे देयर आर डिफरेंट फ्रेम्स फॉर फोन iPhone 17, 16, 16 Plus, iPhone Air, iPhone 14. So these all are the listed frames and having widths information along with that. You will be able to see. Similarly for tablet. So once you click on tab, iPad, Surface Pro, iPad Pro, 12.9, Android Expanded. So these all are the tablets that you can use for promoting your products. Similarly for desktop, if you want to use a MacBook Air, desktop, wireframing or through TV, आप जाते हो ना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में जाते हो तो उसमें how they promote their products, which medium they use to advertise their product. So definitely they used a TV medium, a desktop big size, right? So it depends on you which platform or which through which medium you want to promote your product related to the business. Clear? So these all are the desktop version of the product. Similarly, if you want to make a presentations in form of a slide, you want to discuss about the project. So this slides option is also there available. Means if you want to make a PPT, right, about your business, so you can make the slide here, right? And similarly for watch, you want to use a watch, you want to make a design for your watch, right? That can be visible inside the watch, right? So that is also available here.
and simple paper. For example, you want to take a printout of a design which is available in kind of a like A4 size paper पे A5 पे A6 पे letter pad है, right? So this kind of design is also available along with that. And then social media. Once you click on social media, further you want to promote your business through Twitter post, Twitter header, Facebook post, Facebook cover, Instagram post, Instagram story. So I think you all are aware about that particular part because everyone is using that particular social media and everyone is on Instagram and Facebook. So you can see various kind of advertisement while scrolling that Facebook and Instagram and Snapchat kind of things, LinkedIn, right? Have you heard about that? So all the designs, all the promotions is done through that particular part. जो भी आप देखते हो इंस्टाग्राम पे पे राइट सो सिमिलरली यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस ठीक है वर्क फ्रॉम होम से आप स्टार्ट कर सकते हो राइट सो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट द टेक्निक्स एंड द स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं है कुछ भी डिजाइन कर दिया एंड यू जस्ट अपलोडेड ऑन फेसबुक सो योर बिजनेस विल स्टार्ट रनिंग नो there is must be a proper strategy that you need to follow to start the uh, promotion about the product, right? So this kind of social media promotions is available. So this is kind of a Figma community, plugins icons, and one more thing, archives. So जो आपका previous designs थे उसके रिलेटेड आपका वो सारा आर्काइव्स में लिस्टेड होता है ठीक है फॉर एग्जांपल मेरा वर्क जो है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पे है सो आर्काइव्स में वो विजिबल होगा कि यू कैन क्रिएट यू विल बी हैविंग अ रेडीमेड पैनल दैट यू कैन डायरेक्टली यूज राइट सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल what we are going to do this about this particular software. तो यस जैसे हम सर ये जो फोन सेलेक्ट करते हैं उसमें एंड्रॉइड के दो ऑप्शन आ रहे हैं तो वो कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना है Where which फोन options मोड were फोन फोन में पे जब आपने हम मॉडल सेलेक्ट लास्ट में जैसे दो आ रहे हैं कॉम्पैक्ट मीडियम एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट एंड्रॉयड मीडियम सो बेसिकली अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आई क्लिक ऑन इट सो अब आप देख लो ये विजिबल है डिजाइन तो अगर मैं अंडू करता हूँ इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ फ्रेम पे एंड देन मीडियम पे करता हूँ सो कुछ ऐसे ही है ओके मीन्स इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज साइज राइट ओके सो बिकॉज यू आर हैविंग मल्टीपल एंड iOS आईफोन से ज्यादा ऑप्शंस आपको किस में मिलते हैं एंड्रॉयड में एंड्रॉइड्स में से right having different in size and panels so different mobiles के different size होते हैं so accordingly you can select it it is not like that and in fact you can change the size later on if you have by mistakenly you have design chosen ओके another सर one okay. Right so now I think this part is clear to you and we are going to design a like furniture kind of like सर advertisement परिंदा कुछ पूछना चाह we रही need है to सर do हाँ yes यस Parinda ji? सर मुझे ये पूछना था ये जो फिग्मा है वो तो हम क्रोम में ही डाउनलोड करके नहीं वही यूज करना है ना यूनिटी में तो जो अपने AR हाँ VR जी के लिए यूज करते हैं वैसे ही ना हाँ जी हाँ जी यूनिटी इज द डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड फिग्मा इज ओके डिफरेंट ओके और वो जो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री है उसमें ही जाके फिग्मा को लॉग इन करके फिर उसमें ही ये सब डिजाइन ने वो क्रिएट करना है ना I didn't get your point because there is some noise. फिग्मा के Just आपने जो साइट कॉन्टेक्स्ट लॉग इन फिर कॉन्टेक्स्ट गेट स्टार्टेड फॉर फ्री yeah, जो फिग्मा सर डाउनलोड एक फिग्मा बार पे आप आपको फ्री करना है. एक बार या तो किसी का एक बार लॉगिन करवा के दिखा दो तो सर बेटर रहेगा Okay, just log in. I'm just बस doing stop sharing and anyone can share your screen because it's very easy software. Unity से easy है because it's all about the designing part. That's it. सर सर जैसे ये आ रहा है Okay, आप इसको कंटिन्यू करिए. एक मिनट सर
यहाँ पे ये ऑप्शंस आए हैं। कंटिन्यू करिए, कोई भी आप डिजाइन कर सकते हो। कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू, स्किप, and yes, no, it's my first time. Just select that option. कंटिन्यू सर। Continue. And free but limited features starter. Yes, click on it. Because you will get three options here. Starter है, professional है, and third one is organization. So starter means it is only for you to learn the software part and how to do the designing. And there are certain features which are limited here that you need to purchase. So professional and organizations, these two part is used by the industry person. For example, if you get a job in industry, so that particular or access will be provided by the organization. Okay. In fact, you can also get the job. You can become a UI UX designer, and UI UX designer की मार्केट में बहुत जॉब्स है. You सर can उसके first लिए of तो all, फिर उसके लिए कोडिंग की यूज तो नहीं होती? no, there is no need to use the coding. राइट. एंड इनफैक्ट आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ कि कोडिंग का यूज करना भी आ रहा है, सो देर इज एआई टूल्स, राइट. बट यूआई यूएक्स डिजाइनर इज जस्ट टोटली फोकस्ड ऑन द डिजाइनिंग पार्ट कि वेबसाइट का डिजाइन कैसे होगा, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे होगा, लोगो का डिजाइन कैसे होगा. टू फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू क्रिएट अ लोगो फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सो उसके लिए कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, राइट. सो दैट पर्टिकुलर लोगो आल्सो यू कैन डिजाइन विद दिस सॉफ्टवेयर. Related to the designing part, whatever comes in your mind, just focus on that particular point. Whatever comes in your mind related to the designing, it can be a website designing, it can be a product designing, it can be a logo designing, it can be a user interface designing, everything which comes in your mind. It can be a social media post designing, it can be a you can say that the digital invitation card, right? So whatever the components related to the design that you can do with that help of that particular software. और आप देख सकते हैं इसमें प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मेंशन किया हुआ है. इनफैक्ट यू कैन सी द फीचर्स, हैव अ गो थ्रू ऑल द फीचर्स, जस्ट गो थ्रू इट. सर स्टार्ट. अनलिमिटेड फाइल्स एंड फोल्डर, हाँ जी. advanced prototyping, a team-wide designing library for components, variable and modes, file handoff tools like annotation statuses, and advanced inspection. इंस्पेक्शन. 3,000 plus AIO credit per month and full seats. Yeah, AI credit features also you will get here. And organizations में more components थोड़ा सा और बढ़ जाता है उसमें, Yes, उसमें right? 3,500 ये हो जाते हैं 3500 हो जाते हैं, बट कॉस्ट कोड्स इज का ऑल्सो, या सर। सो कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है. बट ऐसा यस नहीं है कि स्टार्टर में जो भी है उसमें भी बेसिक डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड कोलैबोरेशन इज आल्सो देयर. इनफैक्ट फॉर एग्जांपल आप एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे दो पर्सन काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से मेगा जी एंड परिंदा जी इज वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट. सो दे कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर. Whatever Megha ji will design, that work will be visible to the Prinda ji on Drive, right? So whatever changes Megha is doing, Parinda ji is also able to see that particular changes, right? Whatever the changes, for example, Kamal ji is doing, Vikrant is also able to see the changes. So that particular part for the collaboration is there. Okay. So let's click on continue. Now, what वेबसाइट। do you want to make first? So you will be having various options. App आप बना रहे हो, website बना रहे हो, graphics है, presentations है, whiteboard है, diagrams है. So these kind of choices you can select. Which kind of choice you want to do? We are going to make a what do you say, website बनाए या advertisement करने हैं. तो graphics आप select कर लो, right? Select continue. And graphics is just used for promotion purpose हम करते हैं ना. How do you want to make your graphics? Draw on a canvas. So canvas is option is also there. You can see here, यस right? So Canva का कुछ functionality है. Canva is the basic part.
कैनवा के अंदर बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, बट इन दिस केस यू विल बी हैविंग मोर ऑप्शंस. यूज टेम्पलेट एंड फिनिश. फिनिश. So get started. यस. नाउ जब भी आप स्टार्ट करते हो, सो दीज ऑल आर द टेम्पलेट. जैसे यूनिटी में भी टेम्पलेट्स होते थे ना, 2D डिजाइन, 3D डिजाइन, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी. सो सिमिलरली हेयर यू विल बी हैविंग अ वेरियस टेम्पलेट्स. सो सोशल मीडिया का है, सो विल गो फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट. जस्ट गो फॉर इट. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दिस टेम्पलेट इज रेडीमेड नाउ. दिस पेज इज रेडी टू यूज. So if you want to take a frames, different frames, you can also take it. Right? Visible है? So ready-made template is also there. You can go for any particular template. Go for it. Any template. So what you need to do is you just have to change the text over there. Right? Now if you want to make a different frame, कैसे लेते हैं frames को? Just look that particular option, because आपने जो अभी लॉगिन किया है ड्राइव पे, इट मे बी अ डिफरेंट वर्जन है. मैंने फ्रेम लेना है. जैसे मेरे जो थीम थी वो ब्लैक एंड व्हाइट थी. राइट. सो इट इज डार्क थीम थी, और आपकी जो थी वो लाइट थीम है. ये डिफरेंस है, दैट्स इट. बाकी इंटरफेस सेम ही है. अभी आपको अगर फ्रेम लेना है, फ्रेम लेके देखना है एक बार. जैसे मेरा ऑप्शन आया था ना राइट साइड पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए. हाउ टू टेक दैट. आर यू एबल टू फाइंड आउट? नीचे जाना ऑप्शंस पे, इधर ही लेफ्ट साइड पे हो सकता है वो. इट इज नॉट विजिबल. मीडिया. बॉटम साइड पे देखना, ये ऑप्शंस जो दिख रहे हैं हैंड गेस्चर वाला. नो, नॉट हियर, नॉट हियर. बॉटम Yes, साइड, sir. यस. ये हैंड टूल है, और इसमें थोड़ा सा और आगे जा. कमेंट्स है और आगे. क्या है? Yeah. यस, Tools, क्लिक sir. ऑन दिस टूल. क्लिक ऑन इट. नॉट एबल टू क्लिक. मैं क्लिक तो कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है. कैन यू गिव द एक्सेस ऑफ योर सिस्टम? सर वो एक्सेस कैसे देते हैं सर? Go back to, let me check. Okay, just unshare your screen will tell you through my system how to. अभी तो पता लग गया ना कैसे आपको रेडी करना है अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को. यस सर. यस Yeah. सर, डन हो गया सब. Okay. So unshare your screen will share my screen now. ओके सर. तो ये ऑप्शंस विजिबल थे ये वाले लेफ्ट साइड पे आपके. जस्ट अ सेकंड. These options are visible, यस सर. right? So click यस on सर. file, new design. जैसे आप न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे ना, so that particular design will be visible. Are you able to see this? ये ऑप्शन आ रहा है आपके सिस्टम में? एक मिनट. Other can also try the same. यस सर. आ रहा है आ रहा है. Okay. यस आ सर, गया आ सर. रहे फ्रेम का हैं, आ ऑप्शन रहे आ हैं गया. सर. फ्रेम का ऑप्शन आ गया. यस सर. Okay. So sometime you need to look around that particular component, because सॉफ्टवेयर के वर्जन्स रिलीज होते रहते हैं डेली बेसिस और मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे. सो समटाइम यू नीड टू लुक
around that particular options, right? ओल्डर वर्जन में ये जो आपका फ्रेम्स का ऑप्शन था वो लेफ्ट साइड पे आता था, कईयों में राइट साइड में आता था. सो इट डिपेंड्स ऑन द अपडेटेड वर्जन whatever they are using, right? So now we are going to design for a particular website that is first of all I will explain the tools which are available at bottom side, right? फ्रेम का आपको क्लियर हो गया what why we are using frames? Yes, sir. ओके, सो ये आपका एक टूल है, ये दिस टूल इज अ पिकर टूल्स, मूव टूल, लाइक यूनिटी में जैसे आपका मूव टूल होता था. सो दिस इज द मूव टूल, मींस यू वांट टू मूव अ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स. कोई लोगों को आपको लेफ्ट टू राइट करना है या कोई भी कंपोनेंट है उसको मूव करना है. हैंड टूल इज आल्सो यूज्ड फॉर मूविंग दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड स्केल टूल इज यूज्ड टू increase the or decrease the width of that particular component, right? So these two tools are clear to you. Yes, And sir. next is Yes, your sir. shape tool. Next tool is your shape tool. So here, once you click on that particular tool, you will get a rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, image, videos. So rectangle tool is just like a rectangular box. Line, if you want to draw it, arrow का कुछ design आपको करना है, arrow से related, means it depends on whatever the design you are making and which type of tool is helpful for you to make your design effective. Similarly, star tool is also there. Image and video you want to put on. So that kind of components you can add. These all are the objects. जैसे आपका game objects में 3D objects आप select करते थे ना. So go to game objects, 3D objects, plane, ground, circle, sphere. So these all are the objects. And you can also import a particular file from the outside. Image upload करते थे. Right. Similarly here, this is the options through which you can do that particular task. Next is your pen tool. This is more effective and you can say that the most important tool in Figma. पेन टूल एक तरफ है और बाकी टूल्स एक तरफ है, आप ये कह सकते हो, राइट? पेन टूल मींस यूजिंग पेन यू कैन ड्रॉ अ स्केच. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको अगर मैंने इफ यू नो अबाउट द आर्ट, इफ यू आर एन गुड आर्टिस्ट, यू कैन ड्रॉ अ स्केच यूजिंग अ pen and pencil, right? Similar kind of things you can do digitally using this pen tool. Second thing, using pen tool you can draw a logo, you can create a logo, right? Means zigzag options you can do. Normally हमारे पास जो options थे, rectangle, line, arrow, ellipse, these all are the default options and you cannot change it as per your requirement. But pen tool is one kind of a tool through which you can design, you can make any structure. इनफैक्ट आप अपना स्केच भी बना सकते हैं यूजिंग पेन टूल इफ यू आर अवेयर अबाउट इट. बट इसके लिए आपको यू नीड टू परचेज द स्टाइलस, राइट? माउस से भी आप यूज कर सकते हो बट स्टाइलस इज रिकमेंडेड टू ड्रॉ द स्केच ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल. सिमिलरली लाइक whatever the design you are making, you need a text to add on. Without the text, design is not informative, means you need to convey the information, so text tool is there. And this is the chatbot. Comments, for example, you are working in a team and you are not aware about that particular component, so what you can do, you can comment that particular component. This is our company logo and this is our product information, so you can comment it on for the designing purpose. For the team leader, you can do that particular part. And next is your plugins. Plugins are you once you click on that particular icon, you will get all the logos, selected logos, wireframes. हो सकता है कि ये आपके सिस्टम में थोड़ा डिफरेंट हो, बिकॉज वंस इट प्रोवाइड्स यू द प्लगइन्स. प्लगइन्स समझते हो क्या होता है? व्हाट इज प्लगइन्स? सर जो वीडियो एडिटिंग में लगते हो. वीडियो एडिटिंग में जनरलाइज फॉर्म में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाउ विल यू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर पार्ट? प्लगइन्स. Plugins is just a ready to use things. For example, आप कोई डिजाइन बना रहे हो जिसके अंदर लॉट ऑफ आइकन्स यू आर गोइंग टू यूज. यू आर वर्किंग इन अ कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एंड आपको यू नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स.
एप्लीकेशन आइकन्स, वाईफाई का आइकन्स हैं, टेलीफोनिक आइकन्स हैं, एंड सिग्नल आइकन्स, ट्रैफिक सिग्नल आइकन्स, राइट? Postures. So what you need to do is you can use that particular ready-made things using plugins. Like for example, अभी तो मैं आपको डिजाइनिंग करना सिखाऊंगा, बट nowadays what you can do, you can get a login and sign up page in a few clicks. Right? Within 1 or 2 seconds में आपको login and sign up page मिल जाएगा. Already existing. What you need to do, just change the functionalities, change the color, look and feel. Right? That kind of things. So plugins is just like a ready to eat food. जैसे आप फूड घर में ही बनाते हो, राइट? मार्केट से भी लेके आते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, बट रेडी टू ईट मीन्स कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैगी, विद इन 2 मिनट्स इट इज रेडी, राइट? सिमिलरली रेडी टू ईट फूड्स, कुछ भी अदर मार्केट्स में कोई भी फूड्स आप लेके आते हो, विद इन 2 मिनट्स यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन ईट, यू कैन हैव ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Similar kind of things is there. It is ready to eat things. Clear? Whatever the essential component is with respect to your design, you can take it. For example, यहाँ पे आप जब मैं क्लिक करता हूँ, डिजाइन स्किल्स, यूजर टेस्टिंग एंड फिग्मा, कोड स्निपेज, एंड अगर मैं आइकन्स लेता हूँ, मैं यूज करके दिखाऊंगा हर एक रेडी टू इट को, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर टूल्स. क्लियर है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, wherever you are selecting here, for example मैंने यहां सिलेक्ट किया है, राइट साइड पे आप देख पा रहे होंगे, सो देर आर प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टूल. समझ पा रहे हो? प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज मीन्स once you click on frame, with respect to that all the properties are there on right side. Getting my point? Once you click on rectangle and click on that particular part, right side पे you will be having a different properties. Their variables, styles, exports. Once you click on variables, so we'll show you all how it works. अभी मैंने rectangle लिया है, so this rectangle की पूरी properties आपको right side पे visible हो. उसका length कितना है, उसका width कितना है, dimensions, opacity, fill color, stroke, right? I just took a rectangle. ठीक है? जैसे ही आपने rectangle लिया, so उसके रिस्पेक्ट में अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पे तो वो कंपोनेंट विजिबल होगा. इट्स द कन्वेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल. लेफ्ट साइड पे लेयर्स इज विजिबल एंड ऑन योर राइट साइड प्रॉपर्टीज आर विजिबल. मींस दैट यू कैन चेंज इट. फॉर एग्जांपल यू वांट टू इंक्रीज द लेंथ, सो आप देख पा रहे होगे कि वाई प्रॉपर्टीज आपकी इंक्रीज हो. यू कैन चेंज द पोजिशन ऑल्सो, यू कैन रोटेट द प्रोडक्ट, राइट? इनफैक्ट you can do different part like this. Clear? So this type of rotation is possible using it, right? Similarly, appearance, you want to change the opacity like that. सिर्फ एक rectangle अभी मैंने लिया है, and you can see different effects about that particular rectangle. So first tool I was discussing about that particular rectangle. You can change the opacity, increase and decrease the opacity. Similarly, corner radius. Are you able to see the how it is changing? Corner radius, Yes. 45. Yes. Right? So these all are important for like designing purpose. And appearance आपकी 25% है. I will make it 100% so that it will be visible to you. So let's convert into the button. Up press shift and you can change the. So it's just like a button that you can put in your website or kind of information you can present over there. I will go for that and like that. Similarly, if you want to change the color of that, just click on fill and the color will be visible to you. Different, whatever the color palettes. And one more thing, suppose I will provide a particular hex code.
हेक्स कोड समझते हो? सो फॉर एवरी कलर देर विल बी अ हेक्स कोड, देर विल बी अ हेक्स कोड पैटर्न. सो दैट काइंड ऑफ कलर्स यू विल बी एबल टू गेट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वेबसाइट के थ्रू दिखाता हूँ. मतलब कुछ कलर कोड्स होते हैं, अगर वो कोड हम दिस डायरेक्ट ऑल आर लाके यहाँ द पे कलर डाल। को. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक वेबसाइट शो की है और मैंने बोला आपको कि ये कलर मुझे चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ओसीपी एकेडमी का ही लेते हैं. सो दिस इज द वेबसाइट एंड want to get that particular color. How will you get it? Let me check. Glucoses. So let's take a particular product. कौन सा कलर आपको लेना है? Just let me know. Which color you want to take? इसका लोगो कलर ही ले लेते हैं, राइट? सो हम क्या करेंगे, इसका इमेज ऑनलाइन कलर पिकर, कलर पिकर फ्रॉम इमेज. तो these all are hex codes related to that particular. आप क्या करोगे यहाँ पे, पिक फ्रॉम स्क्रीन. सो मैं क्या करूंगा, यहां से क्लिक किया, check, pick from screen, और let me check, go for it. I'm not able to like get that. What you can do, you can just have a, आप सर क्या आप करोगे इसमें यहाँ से आप डबल विंडो स्क्रीनशॉट. करके तब पिक कर सकते हो। हाँ, डबल विंडो कर सकते हैं. Just have a zoom meeting base. मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. Because there are various windows open in my website. Pick from, right. So this particular color we want to take, so it is available, right? So this will be the hex code that this website will provide. Okay, this hex code, just copy that hex code, go back to, just close it. I will paste this hex code here and click on it. So you can see the exact color will be visible here, right? So this kind of properties, color properties, you can see here, and you can also change the fill opacity. Clear? And stroke, stroke is the boundary line, right? Suppose you want to create the boundary of that particular rectangle. So अभी मैं जो ये टास्क कर रहा हूँ ना, वो विजिबल आपको थोड़ा सा कम होगा. आई विल टेक अ फ्रेम और ऑन टू दैट पर्टिकुलर फ्रेम विल टेक अ, दैट पर्टिकुलर मैं फ्रेम क्रिएट करता हूँ. विल गो फॉर आईफोन 17. आईफोन 17 फ्रेम लेते हैं हम. ये वाला ले लेते हैं, ठीक है. सो इस फ्रेम में मैंने ये, एंड यू कैन ऑल्सो मूव दैट फ्रेम यूजिंग मूव टूल. ठीक है, विल दैट
take that particular frame. Here. So you want to apply some stroke over to that particular frame. Click on it, double click on it, and stroke boundary you can apply. For example, you want a red color, and the width of that particular stroke must be like this. You can also change the width. Are you able to see the effects? Yes, sir. And positions you can also mention. Center में है, inside है, outside है. All these positions you can change accordingly. It depends on your, like this. So अभी आप देख पा रहे होंगे कि there are various things related to only one component. Is that things available in Canva? No. वहां पे क्या होगा, सिंपल एक आपको दे देंगे लाइव. इट इज, यू कैन यूज इट. थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, दैट्स इट यू नीड टू डू. बट हियर I just selected that rectangle only. And with respect to that rectangle, once you select that component, एक rectangle select किया और right side पे आपको various effects देखने को मिल जाए. Right? अभी तो सिर्फ एक rectangle लिए. Similarly, if you take another objects like line, you can create that line. अगर आप shift create करोगे तो वो पूरा आपको वो दिखाएगा. Right? So once you click on line, so similar options, you want to make it center, left align, right align, bottom पे है, center पे है, right? Each and every options will use. So for example, you want to divide that particular page into, or you want just have to drag and drop and use it. मैंने अभी इसको two sections में I have divided. And once you are dividing, you will be able to see the panel here, like how you can adjust, how you can synchronize the things, right? So lines के dimensions is there. You can increase the dimensions here. Opacity you can also change. You want to make like this. And stroke is also available. Which type of stroke you want to make. This is just a line and you are just using. Clear? Starting point, end point, and effects. Let's see the effects here. Now, drop shadow, layer blur, noise. So you can change, you can see the effects here. कोई भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, यू कैन सी द इफेक्ट्स. नॉइज है, ठीक है. आर यू एबल टू सी द इफेक्ट्स? So now you just take 5 minutes and whatever you have done till now, you just have to just have a quick overview of these components. Just revise your components, whatever we have delivered and whatever you are getting from our sessions. Just have a quick overview of it. Are you doing side by side, everyone? Because it's a very easy part, you can do it side by side. It's no issue. I hope all of you have logged in. Yes, sir. Okay. Just take 5 minutes and after 5 minutes, we'll discuss further. Just explore the tools. And if you are having any doubt, you can share your screen and you can see. Anyone can share your screen and create a button like this. और उस बटन में हम टेक्स्ट भी डालेंगे. You can also share your screen if you want. Should I stop sharing? So that you can share. Anyone from your from the participants can share your screen.
शेयर कर रहा है कोई? यस सर, विक्रांत मैंने शेयरिंग शेयर सर। किया। मैं सर आपको की हद तक बाय नाउ पे गया। ओके, सो अभी मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम? विक्रांत है ना? विक्रांत, विक्रांत। विक्रांत। ओके विक्रांत, आई एम जस्ट गिविंग यू अ टास्क, राइट? सो जब जो अभी तक पढ़ा है वो उसका यूज करके ही आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वांट टू मेक अ डिजाइन फॉर iPhone 17, right? Which consists of a particular login page जिसमें आपका एक बटन होगा और दो इनपुट फील्ड हो, दैट्स इट। ओके, जैसे दो ईमेल और इनपुट, पासवर्ड। यस, ईमेल, पासवर्ड एंड देन लॉगिन। लॉगिन। ठीक है, सो दिस ओके। पर्टिकुलर login page you need to design for iPhone 17. ओके। Other people can also have a quick overview of it. Are you sharing your screen? Vikrant, are you sharing? Your screen is not visible. पर मैंने स्टॉप किया था, मैं आपको जो आपने टास्क दिया उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। Acha. I just told you to like share your screen so that other can also see that. ओके, ओके। Just a simple task. If you just share it, कोई भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है so that I can also discuss. I will also help you, no issue. Right. So अभी तक हमने क्या किया? We have taken a frame for iPhone 17. यस सर। Right. So first task we need to take a rectangle. So using rectangle, we are going to create a button first. We are going to create a button. But I think you're okay. Do one thing, Vikrant, just change the color of your frame so that जो उसके ऊपर कंपोनेंट है वो विजिबल हो और फ्रेम के अंदर ही आए। ठीक है, राइट, परफेक्ट। बैकग्राउंड कलर आपने चेंज कर दिया, दैट इज ओके। दिस इज द बैकग्राउंड कलर विच यू हैव चेंज्ड। आप लेयर्स भी सिलेक्ट कर यस। सकते हो कि कौन सी लेयर का आपको कलर चेंज करना है। ठीक है ना? सो नाउ नेक्स्ट टास्क है आपका, यू हैव नीड टू क्रिएट अ बटन। ओके सर, और मैं वो इसका अच्छा है। डोंट चेंज द कलर ऑफ दैट थीम, लाइक आर यू यूजिंग दैट थीम? ओके, सर मैं इसको चेंज कर सकता अभी एक कंपोनेंट में फोकस रखते हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बटन ऑल्सो। हूँ। ओके सर।
तो कलर फुल आपको अभी आप बना रहे हो इनपुट फील्ड. Do one thing, Vikrant. If you are doing the designing part, na, first complete the first component. ओके ओके अभी तक आपका जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट का कलर टेक्स्ट दिस कंपोनेंट इज नॉट कंप्लीटेड. फर्स्ट कंप्लीट द फर्स्ट कंपोनेंट देन मूव टू द सेकंड वन. Because why I'm saying this? Because once you complete first component, na, their color, look and feel of that particular product will be used by the another component as well. तो अब जब तक आपका फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट ना हो सेकंड पे मूव ना करिए. So same for others, same instructions for other also participants. People. So the colors which you are using is this. अब देख पा रहे हो कलर आपको अच्छा लग रहा है ये वाला. बट डोंट लाइक टेक इट इन अ बैड वे. बट मैं सर बस ट्राई. ट्राई कर रहा हूँ. No, no. We need to try the exact product because we need to have a perfect matching कि जो भी आप डिजाइन कर रहे हो वो अच्छा लगना चाहिए. So what you can do, you can take help from online like color palettes. So go to online tools, select color palettes. So आप वहां से color palette select कर सकते हो अपने login page के लिए. And one more thing you can do, you can use the chat GPT also. Design a login page for me with better look and feel. उधर से आप कलर ले सकते हो. ठीक है ना. ये आपने खुद से डिजाइन किया अभी. क्या सर? ओके. ओके डिजाइन कर ली. मूव अहेड. Other can also try in your system. सर मैंने ट्राई किया थोड़ा सा चेक करना सर. हम्म. पापा एक बात बताओ कौन सी टीम है फिर आपकी मम्मी की टीम है. So no, no. Just you can mention here. Please provide the in form of an image. You can mention here. वो आपको आइडिया दे देगा कि कैसा डिजाइन कर सकते हो. ठीक है. We are just getting an idea from the AI tools, right? So सर मैंने ये जो आप यस. हाँ इस पे मेंशन कर सकते हो. डिजाइन आपने कुछ मेंशन हाँ किया है ना. जनरेट एन इमेज फॉर मी. ऐसे आप लिख सकते हो इसमें वो आपको इमेज जनरेट करके देगा. ओके. बट वो आपको इमेज जनरेट करके दे रहा है जिसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते. बट फिग्मा विच यू आर यूजिंग हियर यू कैन चेंज ईच एंड एवरी कंपोनेंट. ठीक है. सो वो डिफरेंस होता है. आप आपके माइंड में आ रहा होगा सर अगर चैट जीपीटी बना के ही दे रहा है देन व्हाई आर वी यूजिंग फिग्मा. दैट कैन दैट दिस क्वेश्चन कैन कम्स इन योर माइंड. सो व्हाट यू कैन डू. फिग्मा इज द डायनेमिक सॉफ्टवेयर बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ इमेज ओनली, राइट. सो जनरेट करके दिया. यस. So same kind of image you need to prepare for like in Figma. So आप इस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए. इस इमेज के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं ठीक है उसका जितना एग्जैक्ट कलर है वो आपको मैच करना है. सो आपको वन बाय वन कंपोनेंट का यूज करके उसको डिजाइन करना है. क्लियर. ओके. या डाउनलोड इट एंड लेट्स मूव टू द लॉगिन पेज एंड सॉरी लॉगिन बटन. जो लॉगिन बटन है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिजाइन दैट.
Are you facing any problem? You can ask Vikrant if you are facing any issue. सर मुझे जो हम कलर कोड है वो कैसे इस पर अप्लाई करेंगे? Uh, you just have to upload that image in a color code picker. एक वेबसाइट थी, आप गूगल पे जाएंगे, कलर कोड पिकर, आप वेबसाइट पे वहां से अप्लाई कर सकते हैं। पिकर फ्रॉम इमेज आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? आगे ना, इसको सिलेक्ट करो, इस पे इमेज अपलोड कर दो और उधर से कलर जो भी आपको चाहिए वो पिक कर लो। अपलोड द इमेज फर्स्ट। हो गया अपलोड? राइट, नाउ सिलेक्ट योर बटन कलर। बटन का कलर हमें अभी चाहिए, नॉट हियर, जस्ट क्लिक ऑन बटन, द कलर कोड विल बी विजिबल टू यू। क्लिक ऑन लॉगिन बटन ना। लॉगिन करूँ से? हाँ, आप यहीं पे सिलेक्ट करो ना, हाँ ये क्लिक ओके करो, ओके। आपको हेक्स कोड मिल गया। सो हेक्स कोड आपको मिल गया, यहाँ से यस सर। कॉपी करो, दिस हेक्स कोड यू नीड टू कॉपी एंड सर पेस्ट जैसे ओवर देयर। सर जैसे बैकग्राउंड में इसमें डबल शेड आ रही है तो फिर वो दोनों शेड्स कैसे लेके आएंगे एक साथ? हाँ, और डबल शेड्स ऊपर भी, डार्क नीचे लाइट आ रहा है जैसे। हाँ वो भी आपका शेडो के, शेडो आ रही है ना उसका, आई थिंक यस सर। वो भी आ जाएगा। पहले आप फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे होगा। सर ये फिल में ही कलर कोड को पेस्ट करना होगा? हाँ, क्लिक ऑन बटन एंड फिल पे आप कस्टम पे जाओगे, कस्टम, गो बैक टू कस्टम, कस्टम, हाँ यहाँ यू जस्ट हैव टू पेस्ट इट एज ए हेक्स कोड है। सो देयर आर डिफरेंट कोड्स, सो जो भी कोड है, अभी हमने वहां से कॉपी कौन सा कोड किया है? एस कोड हेक्साडेसिमल किया कोड। है। हाँ, तो इसमें आप यस। पेस्ट करेंगे राइट साइड पे, इसके सामने जो कंपोनेंट आ रहा है ना, BF6A02, दिस इज द कोड, यहाँ ओ। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे एंड देन एंटर, राइट? Here you will be able to see the exact color of that particular things. Now we need a login text inside this button, right? वो white color का है, so white color you can take. First take the text and paste over there and type the text. Login. Now एक्सक्यूज you मी can, सर। yes, सर आई नीड योर हेल्प सर, मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। this particular screen is not visible. सर एक्चुअली मेरे में ये जैसे यहाँ पे पेज 1 पेज 2 पेज 3 आ रहा है ना सर, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे में। Okay, let's hold on. First यस सर। we complete the button part, then we'll check your problem. Okay. ओके। सर जैसे ये बीच में ये जो डिजाइन लिया हुआ है आईफोन 17 का, इस लाइट ग्रे कलर किया हुआ है सर, ये वाला कलर कैसे चेंज करते हैं? मुझे इसका ऑप्शन नहीं पता था। Just click on that particular frame. Click on frame. Just Vikrant, click on frame. फ्रेम पे क्लिक करो, लेफ्ट साइड पे भी आप क्लिक कर सकते हो लेयर पे, और इसके ना टॉप साइड पे भी एक वो होगा, इंफॉर्मेशन होती है, आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आपने फ्री क्लिक किया फ्रेम पे, राइट साइड पे फिल कलर पे आपको दिख रहा है D9, D9 एंड D9। यस सर। तो दिस हेक्स कोड यू कैन चेंज, राइट? वट एवर द कलर्स यू वांट टू ऑप्ट यू कैन चेंज इट। जस्ट यहाँ से कलर पिक करके वहां से चेंज करो।
Press enter. Okay, but it is in because you have changed to which color? आपने क्या किया है ना, आपने जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको चेंज कर दिया है। हाँ, उसको व्हाइट ही रखिए। जो फ्रेम का कलर है उसको चेंज करना है अब। फ्रेम कलर इज दिस। एक फ्लेम कलर में चेंज कर चुका हूँ सर। Okay. Now you are making input field. Inside this, you are going to create the input field. Yes, others are also doing. Kamal ji, Parinda ji, Megha ji, are you doing side by No. side? नो सर, सर एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम, लाइक अगर मैं है ना क्रोम ओपन करती हूँ ना तो सर जूम का मुझे स्क्रीन नहीं दिखता है, तो सर मुझे वहां पे कोऑर्डिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। Okay, just Vikrant, just unshare your screen. Let me check their problem first. Side by side, you can do. Okay. सर दिस इज Okay. So, in which phase you are facing problem? सर इसके आगे जैसे है ना मैंने ये किया था, इंसर्टेड अ रेक्टेंगल। Mm-hmm. Okay. So create the rectangle anywhere inside this. So this is a line I think that you have created. Yeah, this is the way. सर इसमें टेक्स्ट कहाँ से इंसर्ट होंगे? So जो भी आपको कंपोनेंट लेना है वो बॉटम साइड पे जो भी पैलेट्स बने हुए हैं उसमें से होगा। टेक्स्ट पे टी है सर ना, टी। यस जस्ट सर, क्लिक टेक्स्ट। क्लिक सर करो और इट्स उधर से जाके पेस्ट कर दो। सर टेक्स्ट। क्लिक करो जहां पे आपको टेक्स्ट पेस्ट करना है, जैसे आपने रेक्टेंगल पेस्ट किया था ना, ऐसे टेक्स्ट पेस्ट करना है। सर ये कर रही हूँ तो ये हट जा रहा है। वो हट नहीं रहा है, वो आपको इट लुक्स लाइक कि वो चला गया बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इन सेम कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ योर रेक्टेंगल। सर फ्रॉम चेंज वेयर द कलर। टू चेंज द कलर? फिल कलर है ना, राइट साइड पे फिल कलर। यस। यस, चेंज द कलर हियर। नो नो, कर क्लिक ऑन आइकन। क्लिक ऑन आइकन। रेक्टेंगल है ना छोटा सा, हाँ जी, यहाँ से चेंज द कलर। आई थिंक यू हैव चेंज द fill color. Stroke color you are changing, not fill color. Fill color आपको चेंज करना है। There सर is the दिस वन? difference. Yeah, fill color this one. इसमें जो D9, yes, this one. सर इट्स नॉट वर्किंग। सिलेक्ट करो ना ऊपर पैलेट से, just select it. Now change. ओके। कि इसके ऊपर टेक्स्ट अगर आप लिखोगे तो विजिबल होगा। वो व्हाइट था, टेक्स्ट भी व्हाइट है, so it is not getting visible to you. सर टेक्स्ट। सर टेक्स्ट ही नहीं आ रहे हैं उसमें। टेक्स्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट का कलर चेंज करके। हो सकता है कि वो बहुत छोटे स्मॉल साइज का हो। टेक्स्ट क्लिक करके उसको पेस्ट करो रेक्टेंगल के ऊपर। पेस्ट ऑन रेक्टेंगल। टाइप एनी टेक्स्ट हियर। ये टाइप हो गया। अब उसका साइज चेंज करो आप। विजिबल है बट साइज छोटा है।
साइज कैसे चेंज करेंगे? राइट साइड पे टाइपोग्राफी ऑप्शन है, टाइपोग्राफी में 12 है साइज। यस, ओके दिस चेंज द साइज। Still it is not visible. Just increase the size of that particular text area. इसका जो एरिया है ना टेक्स्ट का, वो चेंज करो। मैं बताता हूँ, आप अनशेयर करो, मैं लेके बताता यस सर हूँ। मैं अपनी स्क्रीन में बताता हूँ इसको लेके ना। So go back to text here and we'll go for that and login, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये एक सिलेक्शन का ऑप्शन है। इसको पहले मैं इसको just move it to some other place. Where is rectangle? तो मैंने ये लिए है and then right side पे we have changed the color and we want to apply some text over there. Just click on text and select like this. Here you can mention the text, right? Once you mention it, right side पे you will get a size here. First of all, select this text, right side पे, then you can change the text size. First of all, you have to select all. ठीक है, लेट मी ट्राई जैसे दिस वन लॉगिन हमने किया, लॉगिन में सिलेक्ट किया, राइट साइड पे यू कैन चेंज द एंड मेक इट एट द सेंटर लेवल। सेंटर लेवल किसका है? ये बॉक्स का है, और बॉक्स भी आपका टेक्स्ट का सेंटर में होना चाहिए, लाइक दिस। एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट बोल्ड, you can make it bold like this. You can make all the stroke corners. Clear है? यस सर Yes, other also participants, you need to try it. ठीक है, explore all the tools which are available, जो भी अभी तक डिस्कस किया है, because जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे you will not get all the details. You should be perfect in that particular designing part, right? मैंने ट्राई किया, एक बार चेक करोगे सर? Yes, I'm just stop sharing. You can share. सर कैन आई शेयर नाउ? Yes. सर इज इट विजिबल? Yes, visible. सर फिलहाल कुछ ऐसा ट्राई किया। Okay. डिजाइन ये खुद से किया है या प्लगइन यूज किया कहीं से? सर प्लगइन में मैंने सिर्फ फेसबुक का लोगो यूज किया है, बाकी कुछ। Okay, perfect. But here you can see the alignment of all the component is not perfect. So we'll see the alignment part later on. यस ठीक है? यस So how to align all the things that we will discuss in tomorrow session, and along with how to design the logo. Clear? So आप खुद से भी ट्राई करना कैसे आप अलाइन कर सकते हो, बिकॉज आप देख पा रहे हो लॉगिन और लेबल के बीच में थोड़ा सा गैप नहीं है और वो पूरा लेफ्ट को जा रहा है। ठीक है, सो दैट यस अलाइनमेंट यस पार्ट वी विल डिस्कस इन टुमारो सेशन। ठीक है, यस अलोंग विद द अदर लोगो डिजाइनिंग पार्ट। यस। सर एक सो और चीज़ पूछी थी आपसे। सर जैसे मैं ये यूनिटी में जब हम ये मूव स्फेयर वाला ये डबल क्लिक करते हैं विजुअल वाला, यहाँ पे ना सर एक देखो सर, इसमें वो जो आपने वो कोडिंग का नाम वो चेंज करने के लिए बोला था ना सर, वो कहाँ पे होता है सर? वो ऑप्शन में पता नहीं लग रहा, यहाँ पे ये पूरी कोडिंग आ रही है सर, ये चीज़ आ रही है। दिस इज नॉट द कोड विच यू आर। ये सो सर मुझे यही पे कोड, डाउट हो रहा था। आप आपको कोडिंग का क्या चेंज करना है? वो आप कहते हैं जो नाम हमें उसमें मिलता है, मतलब चैट जीपीटी हाँ, में जो यूनिटी मिलता है वो यूनिटी सिर्फ यूनिटी यूनिटी पे, नाम। यूनिटी पे क्लिक करिए, यूनिटी पे क्लिक करो। यस विच सर। कोड यू वांट टू चेंज? मूव स्फेयर, लाइक यस सर। मूव स्फेयर नाम है इसमें, और यस कोड ओपन करो इसको। सर, ये वो जो जस्ट ओपन डबल किया था क्लिक सर ऑन वही मूव, जस्ट क्लिक वही ऑन इट।
Yeah, just click on it once. सर जो विजुअल स्टूडियो है इसमें मतलब लॉगिन करके करा, मैंने फिलहाल स्किप करके फिर लॉगिन No, किया no, था। you just have to sign in first. साइन इन के बाद होगा सर? हाँ, साइन इन के बाद होगा। कोड आपका ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा जब आप ओपन करोगे ना। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट go to sign in and it will be ready to use. तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर साइन इन का ऑप्शन है। पर्सनल अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। कंटिन्यू करो इसी से। क्लास ले रहे हैं। हाँ कर लो। हाँ कर लो। हाँ हाँ हाँ। बता दूंगा फोन करके। ठीक। तो लॉगिन तो हो गया। तुम्हारी क्या स्टोरी? लॉगिन हो गया, इसको आप कट करिए, अभी दोबारा से ओपन करिए। अच्छा जड़वा देते से। हाँ देखो मिलता। कट कर दीजिए इसको भी। अगेन ओपन इट। ठीक है। हाँ ठीक है। सही। अरे अभी छोड़ जाओ ना, छोड़ देना तुम अपने को। Based on your solution, you might need to install extra component for a full development experience. इंस्टॉल करो इसको, इसको इंस्टॉल करना है। एक मिनट रुको मैं भी कर दूँ। एक मिनट। Because there might be a issue in your installer, like there are some components which is missing. That's why it is this code is not visible. So ये वाला these करना two है ना? components, all these two components you need to install. Then it will be visible to you. उसके बाद visible हो जाएगा, ठीक है? इसमें यस करना है सर? नहीं नहीं, अभी इंस्टॉल हो रहा है ना, इट विल टेक टाइम, डाउनलोड हो रहा है अभी, ठीक है? ओके उसके बाद आप इसको बंद करके ओपन करेंगे, देन कोड विजिबल हो जाएगा। कोई भी इशू आता है ओके मैं सर। दोबारा डिस्कस कर लूंगा इसको दोबारा, ठीक है? ओके, सो गुड कनेक्शन होना चाहिए इसके लिए थोड़ा सा, ताकि डाउनलोड हो जाए। कनेक्शन तो ओके सर। सो इट टेक्स टाइम, ओके? ओके सर। Yes, we'll see tomorrow, right? We'll come, you just have to come up with the doubts, do the practice as much as possible morning, right? We'll design ओके that सर। logo part. Okay, we'll see you tomorrow. Till then, goodbye, good night. थैंक यू Goodbye, सर। sir. गुड Thank नाइट you, सर। sir. Good night. हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम।